हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूं जिनके आपको आंसर्स जस्ट गिव मी 1 मिनट। हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जिनके आंसर्स आपको, अगर मैं सबसे सिंपल भाषा में बोलूं तो बहुत ऑनेस्टली नहीं देने हैं, बट आपको एग्जैक्ट वो चीजें बोलनी है जो कि रेलेवेंट होगी जॉब रोल से। ठीक है, तो यू हैव टू बी अ बिट डिप्लोमेटिक व्हेन यू आर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। जॉब से रेलेवेंट अगर आपके पास इन क्वेश्चंस के आंसर्स है वो अगर आप बोलते हो तो इट विल हेल्प यू लैंड योर ड्रीम जॉब। सो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहली चीज, एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगी कि आई एम नॉट टेलिंग यू और आई एम नॉट गाइडिंग यू टू बिकम डिसऑनेस्ट और आंसर विद डिसऑनेस्टी इन एन इंटरव्यू, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू टू आंसर to the relevance of the circumstance, the relevance of the interview. If you are going to talk about a skill which is not relevant enough to get the job, then it makes no sense. So especially these 4 questions that I'm going to discuss with you, इनके कौन से lines में या किस direction में आप answers करें which will help you get your dream job, I'm going to discuss that. ठीक है? So the first question is, what is your weakness? अगर आपसे कोई ये पूछे what is your weakness in a job interview, तो डोंट टॉक अबाउट अ वीकनेस विच इज गोइंग टू अफेक्ट यू व्हेन यू आर वर्किंग इन दैट जॉब स्पेसिफिकली। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पता है, लेट्स से ग्राउंड स्टाफ या कैबिन क्रू से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती हूँ, इनके जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको पता है। आपको पता है कि क्या चीजें वीकनेस, नेगेटिव चीजें हैं इस जॉब रोल की अगर आप मेंशन करते हो। इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉट बीइंग पंक्चुअल, इट इज अ बैड वीकनेस, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एविएशन इंडस्ट्री. You cannot mention that your weakness is that you're never on time. So talk with relevance according to the job role. ठीक है? So be diplomatic in this question. You can talk about a weakness like you have a habit of overthinking, and जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, whenever you are talking about a negative aspect about yourself, end it on a positive note. Let's say कि your weakness is overthinking or over caring nature. So you are working on it because over a period of time you've understood that a balance of everything is the best way to go forward, and that's why you've started to implement this in your life and you've seen positive changes in spite of having this weakness. So I hope you got my answer very clear, and I hope you understood why I'm trying to tell you that you have to be a little diplomatic when you're talking about these negative questions which are asked you in interviews. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर योर हॉबीज? अब अगर आपसे ये पूछे कि व्हाट आर योर हॉबीज, तो इसमें आप क्या जवाब दे सकते हो? ऑफकोर्स अगर आप बोलोगे कि आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल और आई लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल, ओके, इट्स अ गुड हॉबी, you've developed, it helps you be fit, but you have to connect it somewhere to the aviation industry. You have to connect it somewhere which is relevant to the job. ठीक है, let's say you like reading books. So how are you going to connect it? You're going to connect it by saying, I like reading books which are on psychology. It helps me understand different mindsets. It helps me understand how people have a different mindset and how people look at different things from their perspective. So it helps me understand people better. Because ये एक customer facing job role है, people's job role है, तो आप ये चीज को उस वे में डिस्क्राइब करो. लेट्स से इवन इफ यू टॉक अबाउट फुटबॉल और बास्केटबॉल और व्हाटएवर, यू कैन से इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड how you can work together in a team. It has enhanced your team building skills. Did you understand what I'm trying to say? So anything that you are talking about, even if it's a hobby which is not relevant enough for the job role, make sure that you put it out which shows that you are relating to the job role, which will help you enhance your job capabilities. Alright? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट जॉब? अब ये सारे एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए है. ऑफ कोर्स वो आपसे ये सवाल पूछेंगे कि व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट जॉब, एंड आई एम श्योर जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि नेवर टॉक बैड अबाउट योर एम्प्लॉयर, इवन इन रियल लाइफ ऑल्सो. लेट्स बी ऑनेस्ट, यू शुड बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू द company who has given you a job. You should be thankful to the people who trusted in you, who trusted in your capabilities and gave you your bread, at least for whatever duration that you were supposed to be working with them, right? So even in real life, you should not be ungrateful to whoever gives you a job. Maybe that was the first step in your life and you want to move ahead in life, but don't talk bad about any employer. Neither is it good professionally, nor is it good even from within.
being a good human shows that you are grateful to whoever gave you a chance to move ahead in life, right? So what can you say in this situation? You can always say that I'm very grateful to them for giving me an opportunity. However, I'm looking for more opportunities, new challenges, and I'm looking for working in a different or a more dynamic environment now. So you can talk about some stuff like this. You can talk about why you are looking to change, because you find that this company is more dynamic from the other company. Some of the examples that you can quote for sure, because you're an experienced candidate, you will know what are the dynamics of this company in comparison to that company. You can talk about that, but don't talk negative about your ex-employers. Okay. Next question is, why is there a gap in your resume? अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, कुछ कैंडिडेट्स के रेज्यूमे में गैप होता है, कुछ एक्स क्रू होते हैं, फिर वो जॉब ड्रॉप कर देते हैं एंड देन दे वेट फॉर सम टाइम लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज. तो यू कैन टॉक अबाउट हाउ यू यूटिलाइज दिस टाइम व्हेन यू हैड अ गैप, हाउ यू टुक अ स्टेप बैक, you looked within, you upgraded yourself, you worked on your skills, you made your skills better, you got some relevant certifications, some online courses that you enrolled in. You did all these things during this gap, and now you feel and you're confident that you're fit to apply in this organization. So you can talk about these things, and in real life also you should do these things. Let's say there is a gap. Let's say आपने अभी 12th पास किया है and you are aiming to become a cabin crew, एंड 12th के बाद आपने कोई कहीं कॉलेज में एनरोल नहीं किया है या आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, एंड आप सिर्फ इंटरव्यूज दे रहे हो एंड 3, 4, 5, 6 महीने हो गए हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बट योर एम इज टू अप्लाई फॉर अ कैबिन क्रूज जॉब. अब 6 महीने हो गए हैं तो रेज्यूमे में गैप ही हो गया कि 12th के बाद 6 महीने आपने क्या किया. So start building yourself. You can say that I started working on life skills. I started working on my communication skills. I gathered a lot of certifications, or I enrolled myself in online classes to understand exactly how the aviation industry works, because I'm very interested to work in this industry. So you can talk about these things and you can finish your answer positively. So I hope you got an insight as to how you should be answering specific questions to make sure that you are sharing the right amount of information that is needed for you to make a positive impact in your answers. आज के इस वीडियो में बस इतना ही. फॉर मोर फ्यूचर कैबिन क्रू इंटरव्यूज, ग्राउंड स्टाफ रिलेटेड कंटेंट के लिए, कंटेंट रिलेटेड टू preparing for interviews, stay tuned. Thank you very much for your time and goodbye.